ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो? तो कैमरा कैमरा ऑन जल्दी से। हाँ, मैं बता रहा था ये कोन के बारे में और ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज थोड़ा क्लियर करनी थी जो मुझे ध्यान में आया अभी, तो ये तो मैंने कोन की बात की थी, लेकिन कोन जरूरी नहीं हो कॉन्वेक्स हो, मैं ऐसे ही सोच रहा था। हाँ, तो अगर कोन कॉन्वेक्स है तो उसको हम कॉन्वेक्स कोन कहेंगे, बट कोन अगर मैं अभी बनाता ना तो पॉजिटिव। कहाँ गया? अरे कहाँ गया ये? हाँ, इसको कहाँ बंद करना है? जस्ट मिनट, इसका कहाँ गया? तो बंद करना है। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, देयर कुड भी, जैसे अगर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और हमारी अगर एक्सिस इस तरह से हो, तो अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो, अब अगर मैं इनको स्केल अप करूंगा, मतलब अगर इन पॉइंट्स को अगर मैं स्केल अप करूंगा तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स ऐसे, सो इट नीड नॉट बी ए कॉन्वेक्स थिंग, इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ से भी ये होगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ से, सो इट वुड नॉट बी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कोन कॉन्वेक्स है तो हम इसको कॉन्वेक्स कोन कहते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऐसे। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था व्हाट आई कॉल्ड एक्सट्रीम सबसेट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। Of a convex set. So let me write down the definition. An extreme subset of a convex set. Let me इसका नाम कुछ दे देते हैं, चलो, of a convex set C of a vector space, उस vector space में ही होगा सारा vector space is a non-empty subset. F of C is a non-empty subset F of C with the property that if X belongs to F, then X cannot be written as a convex combination of the points of C that lie that lie outside F. चलो वो भी चलेगा। ये यहाँ कुछ तीन को मुझे एडमिट करना है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। हाँ ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब जो कि मैं इससे पहले कह रहा था, अगर ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन इज सिंपलेस्ट वन, तो अगर ये सेट में लो, ये वाला, ये जो इसका साइड है या पॉलीहेड्रन का फेस है 3 डायमेंशन में, इस पे जो भी पॉइंट होगा, it does not lie on a line segment that lies entirely within this C. तो ये मेरा C है, ये जो इसका साइड है ये मेरा F है, या ये ले लो, ये इसको F मान लो, तो of course it lies on a line segment that lies all within F, तो हम इसको कहते हैं एक्सट्रीम सबसेट। अब इसमें भी एक खास है, इफ इट इज अ सिंगलटन, मान लो F इज इक्वल टू, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा ना, ये कोने वाला पॉइंट, ये जो है, this is an extreme subset as a singleton. This X cannot be written as a convex combination of vectors of lines of vectors that lie within C.
सो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस ये जो मतलब ये जो होगा ना, ये अपना एक्सट्रीम सबसेट होगा। लेकिन इफ इट इज अ सिंगल पॉइंट जस्ट लाइक दीज कॉर्नर्स ऑफ दिस पॉलीगन, सो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये एक्सट्रीम सबसेट है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम सबसेट किसी जगह पे सिंगलटन है, तो उस सिंगलटन पॉइंट को हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। So let me write down the definition. तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब more rigorously, मतलब without any reference to polygons and all that, but we can define it for a general situation like this. That is, if x belongs to f and x is some convex combination and it is lies on some line segment, y z for some alpha lying between 0 and 1, then both y and z must belong to f. For y z belonging to c, then yz must lie inside f. And uske bahar, it doesn't lie on any line segment which does not lie entirely within f. A point x is an extreme point of c, is an extreme point of c if the singleton x is an extreme set, an extreme subset of C. The set of extreme points, अब जो ये सारे extreme points है, इसको हम denote करते हैं C is noted by, कभी-कभी हम लिखते हैं ये epsilon of C, कभी-कभी लिखते हैं ext of C, मतलब दोनों ही, मतलब और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? ओके, सो जो कि मैंने कहा था, a face of a polygon or a polyhedron or a side of a polygon in R3 and R2 are extreme subsets, and of course the corners would be the extreme points. तो इसका एक छोटा सा लेमा भी हम कर सकते हैं. A point A is an extreme point. तो सीधा साधा आइडिया है. Extreme point of a convex set C if and only if C minus A is a convex set. यानी अगर A को हम बाहर निकालते हैं, अगर ये फिर भी convex ही रहता है, then A must be the extreme point. ये एक अच्छा characterization है. Proof बिल्कुल इसका easy है. कैसे करें? Suppose suppose A is an extreme point. Extreme point, and let xy belong to C minus A. Implies that xy belongs to C and neither x is equal to A nor y is equal to A. है ना? Implies that alpha x plus 1 minus alpha y belongs to C because C is convex for all alpha lying between 0 and 1, and of course also alpha x plus 1 minus alpha times y cannot be equal to A
for any, it cannot be written as a convex combination of the vectors inside C. For all implies that alpha x plus 1 minus alpha times y belongs to C minus A. Right? वैसे उल्टा भी ऐसे ही चलेगा, I think चलेगा. उल्टा मतलब कि suppose अभी हमने क्या किया था, हमने लिया था A को extreme point. Suppose C minus A is convex, where C is also a convex subset of a vector space X. I think ये तुम खुद भी कर सकते हो. You have to show that A is an extreme point. ठीक है ना? Now since C minus A is convex, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब alpha x plus 1 minus alpha times y belongs to C minus A whenever xy belongs to C minus A. I have to show that for all alpha lying between 0 and 1, which implies that A cannot be equal to alpha x plus 1 minus alpha times y, alpha x, right? For any 0 less than alpha less than 1, where xy belongs to C, which means that A is an extreme point of C. तो हमारा जो Krein-Milman theorem basically है, it's about these extreme points, of course, of an arbitrary set. Arbitrary means मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस, ये नहीं जो हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं. और ये जो हमने प्रूव किया, ये हमने एक आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव किया. We did not think of any polygon, हमने सिंपल डेफिनेशन यूज की. So that's the idea. We want to reformulate these definitions for an arbitrary vector space, which just has the property of having a addition and a scalar multiplication, right? अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये मेरा R2 है, it's a सर्कल है, इसके मुझे बता दो सेट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या होंगे. पॉलीगन के तो मैंने बता दिया, पॉलीगन के कॉर्नर्स होंगे. नाउ क्या मैं, चलो प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखते हैं. सपोज यू हैव अ सेट all xy belongs to R square such that x square plus y square is less than equal to 1. मेरे कहने का मतलब है यूनिट सर्कल. Of course it's a convex set, you know that, right? So what would be the extreme points of C? Can you tell me? जिनको हम C के वेक्टर्स में से उनकी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते. Sir, all the points on the boundary? बिल्कुल, all the points on the boundary. Of course, क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे टेंजेंट डालोगे या कोई लाइन सेगमेंट डालोगे, it will always, जो भी ये लाइन सेगमेंट होगा, it cannot, मतलब ऐसे तो रह सकता है लेकिन पूरे का पूरा C के अंदर नहीं हो सकता. It cannot lie on a line segment which lies within C. तो similarly, अगर मैं तुम्हें कहूँ K या चलो C is equal to all xy belonging to R such that x is less than equal to 0. इसका मतलब ये हुआ x is negative यानी real part is negative. तो ये वाला सेट, ये कॉन्वेक्स सेट है, ऑफ कोर्स, है ना, ये हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट. तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन होंगे? व्हाट वुड बी द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस सबसेट? चलो कोई तो सुन रहा है. सर y axis. इन y एक्सिस तो इसका हिस्सा है ना.
देखो ये Yes, एक्सट्रीम sir. सबसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा, इट ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट विद इन दैट सेट, है ना। देखो यहाँ पे ये Yes, इशू था, इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट विद इन दैट सेट, लेकिन अगर y एक्सिस के पॉइंट्स को देखें, एवरी पॉइंट वुड लाई ऑन सम लाइन सेगमेंट व्हिच लाइज विद इन C। तो व्हाट वुड बी दिस, इस हाफ प्लेन के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होंगे? इसका कोई एक्सट्रीम पॉइंट है ही नहीं। इट हैज एन एक्सट्रीम सबसेट, y एक्सिस इसका एक एक्सट्रीम सबसेट, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट कोई नहीं है। तो इसका सेट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है EXT हम लिख देते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता सही है एक्सट्रीम, क्योंकि वो एक्सटीरियर के लिए भी लिखते हैं कभी कभी। चलो एप्सिलॉन ऑफ C जो है वो 5 होगा इन दिस केस, बट y एक्सिस इज एन एक्सट्रीम सबसेट, बट इट इज नॉट द सेट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। जैसे ये है, ये जो फेस है, इट इज एन एक्सट्रीम सबसेट, but it is not an extreme, क्या बोलते हैं, it's not a collect set of extreme points. Extreme points खाली coordinates। Anyway, तो हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इससे हट के एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हें अप्रिशिएट करो। ओके ओके, हाँ, जैसे हम एक्चुअली ये दिखाएंगे क्राइन-मिलमन थ्योरम में कि अगर तुम्हारे पास एक कॉम्पैक्ट कॉन्वेक्स सेट है, तो एक नॉर्म, अब कॉम्पैक्टनेस आ गई तो टोपोलॉजी आ गई, तो नॉर्म आ गया। फिर कॉम्पैक्ट कॉन्वेक्स सबसेट, then it will definitely have some extreme point। जैसा कि हमने देखा कि एक्सट्रीम पॉइंट था ही नहीं हाफ प्लेन किसी सेट में, लेकिन अगर सेट कॉम्पैक्ट है और कॉन्वेक्स है तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा। और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ये जो k होगा, सेट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स, इट वुड बी द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग the extreme। अगर हम उसका क्लोजर लेंगे तो you will get all the, you will get this convex hull of its extreme points। convex hull था हमारा smallest convex set which contains that particular set would be the convex hull of that set। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, सेट ऑफ कॉन्वेक्स जो हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इट कुड बी एम्प्टी जैसा कि हमने देखा, और इट कुड नॉट बी इवन क्लोज्ड होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यू नीड नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, कौन सा ले, लेट्स टेक ए कॉन्वेक्स सेट, लेट्स टेक all real, let X be the vector space of all real valued functions on interval 0 1, कुछ भी चलेगा actually। Now this is a vector space because sum of two real valued functions, pointwise sum would again be a real valued function, and of course the scalar multiple, real scalar multiple would again be a real valued function। So but if I take this function, if I take C to be the set of all real valued strictly positive functions on 0 1, so then this is a convex set, because if f is positive का मतलब है कि f of x जो है वो strictly positive for all x belonging to 0 1। और अगर तुम लोगे इसी तरह से दूसरी फंक्शन g भी पॉजिटिव है, तो g of x जो है greater than 0 है for all x belonging to 0 1। and now if you take the function alpha f plus 1 minus alpha times f, alpha times g,
सो अगर इस फंक्शन को लेंगे, सो अगर इसको इवेलुएट करेंगे x पे, so that would be actually alpha times f of x plus 1 minus alpha times g of x. So this would be strictly positive for all alpha lying between 0 and 1, क्योंकि ये positive है, ये positive है, ये भी positive है. So of course, so it's a convex function. It means जो alpha f plus 1 minus alpha g also belongs to C. But it does not have an extreme point. So for if suppose अगर f belong करती है C में, मतलब it's a strictly positive function, then g equal to 1 by 2 f also belongs to C. And of course f plus g also belongs to C. उसका मतलब f then can be written as, f को मैं लिख सकता हूं, अगर g है 1/2 of f, then f can be written as 1 by 2 g plus 1 by 2. We can always write it as a convex combination. Any point inside C can be written as a convex combination. ये सही है, 1 by 2 f, g भी है 1 by 2 f. ये ठीक हो गया. Just a minute, मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ऐसे. मैंने क्या लिया, g is equal to 1 by 2 f. So we have got two distinct points inside C, और ये उनकी एक convex combination बनती है. So f इसके बराबर होगा. So it is 1 by 2 g, 1 by 2 g, 1 by 2 f है. ये कैसे होगा? ये तो 1 by 2 f के बराबर है ना? What should I do here? मैंने कुछ गलत लिखा क्या? So I have got 1 by 2 g, 1 by 2 g, g हो जाएगा plus 1 by 2 f. हाँ बिल्कुल सही है, because this is actually equal to g plus 1 by 2 f. That is equal to 1 by 2 f plus 1 by 2 f. That's equal to, सही है. So this is a convex combination. मतलब this can always, हमने लिया ना arbitrary f belonging to C. Any f belonging to C can be written as a convex combination. Alpha को half ले लो of two functions inside C. So f cannot be an extreme point. Again in this case, जो हमारा set of extreme points है, वो phi है. इसमें कोई extreme point है ही नहीं. It's equal to phi. Okay. Now, जैसा कि हमने कहा, और ये भी नहीं है कि सेट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स हमेशा कॉम्पैक्ट हो. जैसे एक नॉन ट्रिवियल एग्जांपल हम ले सकते हैं. अगर मैं लूंगा a R3 में मिलूंगा all x y 0 belonging to R3, मतलब मैं लूंगा यूनिट डिस्क इनसाइड x, मतलब xy plane inside R3, but union with points, ये सेट अगर मैं 0 -1 1 0 -1 -1, थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, but doesn't matter, we can just draw it. इस तरह से है. ये मान लो मेरा xy plane है, so I'm talking about a set. ठीक है, तो ये सेट है मेरा. ये थोड़ा दिखाना जरा मुश्किल है, और इसके साथ एक पॉइंट है जिसमें ऑफ कोर्स x0, ये जरा दिखाना, x0 है, नहीं हाँ x0 है यानी, और ये -1 है y, तो यहाँ पे एक पॉइंट है. दिस इज x, दिस इज y, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट. और z1 है, तो ऊपर की तरफ 1 है. हमारा क्या है, z0 है, यानी xy प्लेन में नहीं, x0 है, तो yz प्लेन में है ये, यानी हमारे इस प्लेन में है xyz. फिर y1 है, z-1 है, y-1 है और z1 है. यहाँ पे एक पॉइंट है. इसी तरह से दूसरा, दोनों नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है.
और YZ प्लेन में है, तो दोनों नेगेटिव कहाँ पे होंगे? आई थिंक यहाँ पे। तो ये सेट मैं कह रहा हूँ। अगर मैं इसका कॉन्वेक्स हल लूं तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा, मतलब इसको मतलब सारे पॉइंट्स ना, the smallest convex set that it contains. Of course मुझे लगता है ये जो इसकी बाउंड्री यहाँ टच होगी। मेरे कहने का मतलब है ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ये कॉन्वेक्स, अगर मैं इसकी शक्ल थोड़ा बेटर तरीके से बना सकूं, so I've got a situation like this. वो है, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ पे एक, ये सर्कल आप समझना, तो इसका जो कॉन्वेक्स हल होगा वो ये वाला सेट होगा, the smallest, it's a convex set, right? लेकिन इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स में ये पॉइंट एक्सट्रीम नहीं हो सकता बिकॉज इट वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ टू सेट्स विद इन दैट सेट। यानी इसका जो सेट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा वो होगा, यहाँ पे होल आ जाएगा और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। तो ये इस जो कॉन्वेक्स हल है जो कि 3 डायमेंशन में है, ये एक सर्कल है इन एक्स वाई प्लेन, तो ये ना यहाँ पे विदाउट दिस पॉइंट। So this set is set of all extreme points of the convex hull of the given set, which is convex, of course, convex hull of the set is convex. But this is not compact because it's not closed, because it is missing a point here, which is the limit point of this set. So therefore, the set of extreme points need not be compact. तो empty भी नहीं हो जरूरी है और compact भी जरूरी नहीं है। सो ओके, और भी हमें कुछ करना है एक्सट्रीम पॉइंट्स में, जो चाहूंगा करेंगे। सो ये तुम्हारा होम असाइनमेंट का ये इतना सिंपल है, 2 लाइंस में हो जाएगा। क्लोजर ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स इन अ नॉर्मल लीनियर स्पेस। चलो मैं पहले लिखता हूँ, इन ए नॉर्मल लीनियर स्पेस क्लोजर ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स, पहला। दूसरा, इंटीरियर ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज, दोनों में वजह ये है, अगर मैं यहाँ बता दूं रीजन, जो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, they are homeomorphisms, continuous, they are continuous in normal linear space, in fact homeomorphism continuous तो है। तो C एक थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका, चलो थर्ड, if A is an extreme subset of B, A is an extreme subset of B and B is an extreme subset of C, then A is an extreme subset of C. तो उसमें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, it's very easy to show. Now suppose that is the case. Now चलो इसको मैं कर ही देता हूँ, पहले दो तो बिल्कुल easy है। So let A be an extreme subset of B and B an extreme subset of C. So let X belong to A such that alpha X is equal to alpha X plus 1 minus alpha Z, Y and Z लिखते हैं, where YZ belongs to C, ठीक है ना। Now since A is a subset of B, A is a subset of B implies that X belongs to B. ये तो बिल्कुल easy था, मैंने क्यों नहीं किया। And B is an extreme subset
of C, which implies that अब x b में है और b is an extreme subset of C और हमने इसको ऐसे लिखा, it implies that ये जो voice set है, just a minute, मैं क्या लिख रहा हूँ, B is an extreme subset of C and X belongs to B. It means YZ must belong to B. But A is an extreme subset of B. It would imply that YZ must belong to A. तो हो गया A must be a मतलब ये सीधा था, ये मैं तुम्हें होम असाइनमेंट दे सकता था. So दूसरा जो हम करेंगे एक प्रॉपर्टी जिसको हम यूज करेंगे वो ये है, चलो इसको प्रूव करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज. That is A plus B, where A and B are scalars, times a set A is equal to A plus B into A for all A greater than equal to 0 and B greater than equal to 0, where A is a subset of a vector space X. So this is true if and only if A is convex. तो इसका solution भी ज्यादा मुश्किल है नहीं, पहला वाला तो easy है, one side. Now suppose A is convex. And let A be strictly positive and B be strictly positive. क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ, then there is nothing to do. है ना? अगर एक भी 0 हुआ तो ये तो हो जाएगा खाली 0 एलिमेंट, है ना? 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हो जाएगा. Suppose A is 0, तो it would be BA is equal to BA. So there is nothing to prove. So we may assume that both are strictly positive. Now if X belongs to, हमें दिखाना है ये इसके बराबर है A plus P times A, but this means it is of this type, A plus P into U, such that U belongs to A, right? So X is equal to A plus B times U, where A and B are non-negative scalars. It is equal to, by the properties of the vector space, PU, which belongs to, of course, A plus BA. तो पहला साइड तो इजी है, दैट इज इसका मतलब ये हुआ A plus B A is contained in AA plus B. Sorry. Conversely, converse तो उसका दूसरा आ जाएगा. And if X belongs to AA plus BA, it implies that X is equal to AU plus BB for some U comma V belonging to A. Now since A is convex, Z equal to A divided by A plus B times U plus B divided by A plus B times V is actually A plus B times U plus 1 minus A divided by A plus B times V. This must belong to B, because this is now alpha. So this is 1 minus alpha, where alpha is a positive number lying between 0 and 1, because A and B are positive and denominator is bigger. So this must belong to A because A is convex. ठीक है ना? So अगर ये इसमें belong करता है, so but X can be written as, so X जो कि बराबर है, X के बराबर है AU plus BV
is nothing but a plus b into z, which must belong to a plus b into a, जो तुम चेक कर सकते हो आराम से. So it means that a plus ba must be contained in a plus b. इसमें दूसरे साइड के इंक्लूजन के लिए